Hey guys, welcome to my new video. This is Redmi Go, Xiaomi's cheapest smartphone. It cost 190 AD in UAE. It should cost in India 3,800 rupees, but for some strange reason they are selling it for 4,500 rupees. This is the global version, which means Play Store comes pre-installed and there's no Chinese applications. The smartphone supports 4G network. You can put two SIM cards plus a micro SD card together, which is great. It has a 5-inch 720p HD display, a Qualcomm 425 processor, 3000 mAh battery, 8 megapixel rear camera with flash and a 5 megapixel selfie camera. The most annoying thing about this smartphone is it comes with only 1 GB of RAM, which means playing games will be tough and also multitasking will be difficult. It has 8 GB of internal storage. This is the black version. So let's unwrap the smartphone and see what's inside. Let's keep the phone aside. It comes with a micro USB cable and a regular charger, which was expected. This is all what the phone comes with. Now let's unwrap the smartphone. It has 8 megapixel rear camera with flash at the back. You can see the Mi logo at the back also. Now let's turn on the smartphone for the first time. There is dimly lit capacitive buttons for the back, home and multitasking. So now the smartphone has booted up. Let's finish the setup. It gives you option if you would like to copy your data from your old smartphone. I will choose setup as new. Unfortunately, because of its price, Xiaomi does not give any fingerprint or face unlock options for this device, but you can choose pattern or pin. It has a default Mint launcher you need to give storage permission to. So this is the home screen. Now let's increase the brightness to the max and see the screen quality. The screen is okay with low contrast. Even after full brightness, still the contrast is low, but for this price it's still good. Viewing angles are okay. On the right, it has power and volume rockers. At the top, it has 3.5mm headphone jack, which is good, and a secondary mic. On the left side, it has two SIM trays. You can have two SIM cards and a micro SD card same time. At the bottom, it has main microphone, a micro USB port, and a single speaker. Let's see which software is running out of the box. It's running Android 8.1 Oreo with January 1 security patch. Now let's check the storage of this device. So unfortunately, you only get 3 GB of usable RAM from the 8 GB RAM of this device. It means you can't install many applications and you need to free up the space frequently. There are plenty of Google Go applications pre-installed in the device. Basically, they are not full-size application. These are the lighter versions like YouTube Go, Maps Go, Google Go, etc. Now let's check the sound quality of this device. So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. Sound quality was not bad for this price. Let's check the display quality. 720p or HD display quality is okay, except for the brightness level, so it will be difficult outdoors. Also, when you see the screen from close, you can see some pixels. Viewing angles are dull. Now let's check the camera. The camera application is basic with few controls. Good thing is that you can shoot videos maximum at 1080p with 30 frames per second. It takes few seconds when you click a picture. Let's see camera's focusing speed. It takes some time to focus. Let's see some camera sample images. So who is this phone for? If you're looking for a secondary device or if you are just using a device for basic things, now this is a good option as it has all the features and excellent price. The only downside is that it has 3 GB of usable RAM from 8 GB of storage, so you can't install many applications, and especially if you like to install games. The biggest negative thing about this device is only 1 GB of RAM, which is very bad for multitasking and also for future updates. But still, for just 190 AD, 60 USD and 3600
Indian currency. It's a value for money device, better than a lot of Nokia small phones. Price for this device is different in every country. In India, it's 4,500 for some reason. In Dubai, you get this device for 190 AD and 3,600 rupees. So if you want to buy this from Dubai, this is the shop you must buy it from, as they are giving the best price for all the Xiaomi devices. And also the price keeps fluctuating, so as the device gets older, they will decrease the price for sure. Now here is a small interview from the owner of this shop. तैयब सर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके इंटरव्यू देने के लिए। तो तैयब सर, जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी लोगों ने आपको भी फ़ोन किया है इंडिया में डिलीवरी या दूसरी कंट्री में डिलीवरी, तो इस बारे में एक बार अगर हम एक प्रॉपर एक अपनी ऑडियंस को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, सबसे पहले तो यूएई की डिलीवरी है। जो यूएई में डिलीवरी हमारे से लेना चाहेगा वो हमारे कंपनी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दे, तो फिर हम उसको यूएई में डिलीवरी दे सकते हैं, पूरी यूएई में कहीं भी चाहिए। ठीक है, विद इन 1 डे या 2 डे डिलीवरी टाइम होगा, तो यूएई में हम डिलीवरी करेंगे। लेकिन बट उसके लिए ये है कि कस्टमर को पहले हमारे कंपनी अकाउंट में पैसा जमा करवाना होगा, फिर हम सेंड करेंगे। और उसके बाद अगर यूएई के अलावा आउट ऑफ कंट्री में किसी को चाहिए होता है तो वो हमसे लेना चाहता है, तो दे विल आल्सो फर्स्ट सेंड अकाउंट मनी, देन वी विल सेंड टू DHL, UPS, लाइक दिस इज मेनी कार्गो हैव। लेकिन अगर कोई एक या 2 पीस ऑर्डर करना चाहे तो वो क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो हम बताएं। पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए भी कोरियर चार्जेस होंगे, कोरियर चार्जेस देने पड़ेंगे कस्टमर को। जो भी DHL के आते हैं, क्योंकि DHL अगर 10 पीस भी भेजो या 1 पीस भी भेजो, उनके डॉक्यूमेंट्री जो चार्जर हैं वो लेते हैं। और जो टैक्स है वो अलग से लगेगा। मतलब जैसे इंडिया जाता है तो वहाँ कुछ कस्टम का टैक्स भी होगा, वहाँ का कस्टम हो या जो भी हो, जो भी टैक्स होगा कंट्री का उनको पता है। ठीक है, तो हम लोग दे सकते हैं हमारी इधर की प्राइस से, वो हमारे कंपनी अकाउंट में पैसा भेज देंगे, हम यहाँ से डिलीवरी कर देंगे। एक और चीज़ मैं सर से पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपके पास सबसे पहले Xiaomi के लेटेस्ट फ़ोन्स आते हैं, या नॉट ओनली फ़ोन्स, आपके पास बाकी जो एक्सेसरीज़ भी आती हैं, तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस महीने के एंड में कोई Xiaomi का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है? जैसे इंडिया में Y3 लॉन्च हुआ है, कोई नया प्रोडक्ट आपके पास आने वाला है सून? जी, ब्लैक शार्क 2 आ रहा है और मैक्स 4 आ रहा है हमारे पास, पोको 2 आ रहा है, F2, ये 3-4 मॉडल जो हैं ये लॉन्च हो रहे हैं। और दूसरा एक पावर बैंक भी वाईफाई कनेक्टेड लॉन्च हो रहा है, इसी महीने एक्सेप्टेड है कि वो आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जब भी आएंगे हम कस्टमर को फ़ौरन डिलीवरी देंगे, सर्विस भी देंगे। चलिए तैयब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा आप वीडियो में आए और आपने हर चीज़ क्लियर की, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी Xiaomi का प्रोडक्ट चाहिए या और कोई भी मोबाइल चाहिए तो आप बेझिझक होके, मैं आपको जो नंबर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप उसमें बेझिझक होके फ़ोन करें। आप या तो तैयब सर से बात कर सकते हैं, अगर वो मौजूद ना हो तो आप इमरान भाई के बारे में पूछें और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनसे कर सकते हैं। डिलीवरी के बारे में मेरे ख्याल में आपको सब क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू तैयब सर। वेलकम सर। So that's it for this video, guys. Kindly subscribe to my channel and like the video. I will really appreciate it. See you soon in my next video. Till then, goodbye and peace out. I hope you enjoyed the video. If you like the video, kindly hit the thumbs up and subscribe to my channel. I will really appreciate that. Also click on the notification icon, the bell icon, so you'll constantly get updated with my new videos. Thank you for watching and see you in my next video. Till then, goodbye.